Good morning, everybody. We'll continue with the chapter Emergency Provisions. Under emergency, we had discussed the introductory part, that is the meaning, the part, and the source from where we have taken it, and the articles related to it. There are three types of emergency. That is national emergency, state emergency, also known as President's Rule, also known as constitutional emergency. And the third category is financial emergency. National emergency I've seen thrice implemented, President's Rule many times, and then financial nil. Fair enough. Then we discussed the consequences. Okay, we discussed the consequences of national emergency on legislative power, executive power, financial power, then on fundamental rights, specifically with respect to Article 358 and 359. How does Article 358 impact fundamental rights? Very good. It suspends Article 19. And 359? 20 and 21. Very good. Then when you talk about national emergency, what is the time needed to approve national emergency by the parliament? 1 month. Okay. And what is the time limit, Swajal, till which national emergency can continue? Maximum time limit? हाँ? मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है नेशनल इमरजेंसी चलने की? तो उसको टाइम लिमिट क्या बोलेंगे? मैंने पूछा मैक्सिमम कितनी होती है? इनडेफिनेट होती है, अनलिमिटेड होती है, और हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए होता है. ठीक है. और मैंने क्या कराया था? हाँ, for approval what kind of majority is needed? Who proclaims the emergency? President. ठीक है. Who revokes emergency? Does Lok Sabha, Rajya Sabha or both have role in revocation? Only Lok Sabha. रोकने के लिए सिर्फ लोक सभा, लेकिन ऑपरेट या कंटिन्यूएशन के लिए बोथ. Okay, approval by Lok Sabha is by which majority? Sorry, revocation? Simple majority. Clear है? Okay. Now let's talk about, write down a note with respect to 44th Constitutional Amendment Act. Note 44th Constitutional Amendment Act. Conditions, okay? कि कुछ 44th Constitutional Amendment Act से कुछ conditions आई थी 44th Constitutional Amendment Act से. Write down, this act restricted the scope of Article 352. This act restricted the scope of Article 352. Yes, 352. कैसे? Sorry, not 350, 358. 358. Article 19 से related है. तो क्या change आया होगा? कि अर्लियर आर्टिकल 19 जो है वो जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था, इट कुड बी डन ऑन ऑल द 3 ग्राउंड्स. वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, लेकिन अब के आफ्टर 44th अमेंडमेंट व्हाट चेंज केम अप? ओनली वॉर एंड अगर वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन है तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा. इन केस ऑफ, इसको बंद कर दो स्वजन, इन केस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन या इंटरनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. आर्टिकल 19 किन केस में सस्पेंड होता है? ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में होता है. नेशनल इमरजेंसी में भी 2 टाइप की अगर हुई तो ही, थर्ड टाइप में नहीं होता. राइट डाउन, द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 can be suspended only when
national emergency is declared on the ground of war और आप बोलेंगे and नहीं बोलेंगे, two आप बोलोगे, एक तो external हो गया, एक internal हो गया. On the ground of external, war or external aggression, it's one and the same thing. War or external aggression. On the ground of, declared only on the ground of war and external aggression. ठीक है, bracket है, that is it is not suspended on the ground of armed rebellion. That is it is not suspended on the ground of armed rebellion. Is this point clear? सेकेंड पॉइंट लिख लो, इसमें एक और चीज ऐड हुई थी. सेकेंड पॉइंट अंडर 44th अमेंडमेंट ही, only those laws that are related to emergency are protected from being challenged. ठीक है, are protected from being challenged. You know कि जब आर्टिकल 19 सस्पेंड हो रहा है तो कुछ लॉज जो आर्टिकल 19 को हटा रहे हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं. ऑफ कोर्स, क्योंकि राइट है आपके पास है ही नहीं कुछ भी करने का, तो वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे. लेकिन वन थिंग इज क्लियर, वही लॉज जो इमरजेंसी से रिलेटेड है वही प्रोटेक्ट होंगे, उसके अलावा नहीं. दिस इज इंपॉर्टेंट. इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड नॉट अदर लॉज, एंड नॉट अदर लॉज. Also, only those executive actions, which are taken under such laws, only those executive actions which are taken under such laws are protected from being challenged. Protected from being challenged. And not other executive actions. And not other executive actions. Is this point clear? So this is all about Article 358. कुछ ही बस इतना ध्यान रखना. In short, 358 suspends Article 19, but Article 19 is suspended only on one ground, that is external emergency, and not internal, that is armed rebellion. में इतना ध्यान रखना इसमें. Second, हम आ जाते हैं 359. Article 359. What does it deal with? Yes, it deals with suspension of it deals with suspension of other fundamental rights. It deals with suspension of other fundamental rights. Article 359. It deals with suspension of other fundamental rights except Article 20 and 21. अब इसका further explanation लिख लो. Article 20 and 21. ये बताया था 21 क्या है हनीशा? रिविजन नहीं हो रहा है इसीलिए तो. 21 कितने बार डिस्कस किया? 21 तो बोलना ही नहीं है आपको. आपके जीने का अधिकार, लाइफ एंड लिबर्टी. 21 शुभंग, अब मत भूलना, शुभंग जिंदगी से रिलेटेड है. 21 तो कभी व्यवहार भी देना तो 21 जरूर दे देना, जस्ट सो दैट यू रिमेम्बर इट. ओके, ठीक है. अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखो. It authorizes the president. It authorizes the president. Authorizes the president to suspend the right to move to any court. To suspend the right to move to any court for the enforcement of fundamental rights. For the enforcement of fundamental rights during national emergency.
ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, दैट इज as such only FRs, as such fundamental, as such FRs are not suspended, yani fundamental rights are not per se not suspended, but only their enforcement. Per se not suspended, fundamental rights are not suspended, but only their enforcement. Unlike 358, 358 में per se article 19 gets suspended. Here not fundamental rights. तो आप ये नहीं बोलोगे article 14 suspend हो गया, 15 suspend, आप बोलोगे उनका enforcement suspend हो गया, but except article 20 and 21. Next point. अच्छा ये भी ध्यान रखना, ठीक है, पर से नहीं एनफोर्समेंट सस्पेंड हुआ, लेकिन वही फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होंगे. अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा राइट है, 2021 तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो आपको पता है. इसके अलावा भी प्रेसिडेंट कैन मेक एन एक्सेप्शन टू सम राइट्स, ठीक है, अगर उनका मन किया कि सारी फंडामेंटल राइट सस्पेंड करने एक्सेप्ट 2021, वो तो हो ही नहीं सकता, तो सस्पेंड हो. अगर बोल दिया कि नहीं, आई विल स्टिल कीप 14 and 15 alive, then it will not get suspended. Matlab their enforcement is not suspended. Getting this point? Write down. The suspension of enforcement, the suspension of enforcement relates to only those fundamental rights, relates to only those FRs that are specified under the presidential order, that are specified under the presidential order. अब लिखो टाइम पीरियड. Suspension is for the period, suspension is for the period during the operation, that is the operation of emergency, the period of operation of emergency. Suspension is for the period, that is for the period of operation of emergency. जब तक emergency रहेगी तब तक वो particular rights का enforcement suspended रहेगा. Suspension is for the period, that is for the period of operation of emergency, or for a shorter period, or for a shorter period as mentioned in the order. Shorter period या छोटा, कंप्लीट इमरजेंसी में हो सकता है, या उससे छोटा. बोलेंगे नहीं, हम सिर्फ 3 महीने के लिए प्रेसिडेंट बोल रहे सस्पेंड करने को, तो सिर्फ वो 3 महीने सस्पेंशन रहेगी, नॉट एंटायर इमरजेंसी. मतलब यू कैन सी कि 359 could be limited with the help of president action. Okay, short as mentioned in the order. Also next point में लिख लो, suspension order may extend to whole, may extend to whole or any part of the country. नेशनल इमरजेंसी में भी कुछ ऐसा था, ठीक है, इट वॉज प्रेसिडेंट्स पावर वेदर ही वांट्स टू एक्सटेंड नेशनल इमरजेंसी टू एंटायर कंट्री और टू अ स्पेसिफाइड पार्ट. ऐसे यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू नॉट पर्टिकुलर आर्टिकल, तो उसी तरीके से आर्टिकल को भी स्पेसिफाई कर सकते कि सस्पेंशन जो है सिर्फ इस एरिया में रहेगा, पूरे देश में नहीं रहेगा उन पर्टिकुलर आर्टिकल्स का. ओके, या उनका बेटर यूज द वर्ड एनफोर्समेंट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन. 44th Constitutional Amendment Act 1978 restricted the scope of Article 359 in two ways. Restricted the scope of Article 359 in two ways. पहला,
फर्स्ट, प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू, किस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड है स्कोप 359 का? द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ, right to move to the court. The president cannot suspend the right to move to the court for the enforcement of fundamental rights, article 20 and 21. पहला तो ये लिमिटेशन आ जाता है आर्टिकल 359 पे। लिमिटेशन मतलब होता है कि वो काम नहीं हो सकता उसके अंदर। आर्टिकल फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 क्या है, 21 क्या है? 20 क्या है स्वजल? हाँ 20, हाँ किसका? आपका? वो 21 है। 20 पूछ रही 20। हाँ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, याद रखो, वहीं पे मेंशन कर लो, नहीं याद रहता है तो आर्टिकल 20 ब्रैकेट में लिख लो, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। लिख लिया 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, एंड 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन क्या है, क्या स्कोप कैसे रेस्ट्रिक्ट होता है? Only those laws which are related to emergency, only those laws which are related to emergency वही जैसे 52 में था, ठीक है, are protected from being challenged, are protected from being challenged and not other laws, from being challenged and not other laws. And the executive action, and the executive action taken only under such a law is protected. Taken only under such a law is protected. Is this clear? अब हम that's all with 358 359। एक बस कॉलम जस्ट फॉर योर रिवीजन, दो साइड पे बना लो आर्टिकल 358 359 का डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359, रिवीजन के लिए आसान हो जाएगा। चाहो तो ये खुद कर सकते हो या मैं करवाऊंगी, टेल मी। कर लोगे पक्का? कल मैं देखूंगी, फिर मुझे मत बोलना मैम मैंने किया नहीं। पहला क्या होगा? ठीक है, पहला चाहे तो ये लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। 358 में क्या लिखोगे? इट इज रिलेटेड ओनली टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। 19 आएगा ना 358? अनीशा अच्छा है थे नहीं ना, लिखो लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स। 358 में लिखो बेटा, पहला लिखो लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। थ्री फिफ्टी नाइन, हाँ, या उधर लिख लो एक्सटेंड्स टू दोज फंडामेंटल राइट्स, एक्सटेंड्स टू दोज फंडामेंटल राइट्स whose enforcement is suspended by a presidential order. Do you agree? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, extends to those fundamental rights whose enforcement is suspended by a presidential order. जो presidential order में mention हो जाएंगे, मैंने लिखवाया है अभी प्रियांशी, ठीक है। नंबर 2 डिफरेंस लिखो, आर्टिकल 358 automatically suspends fundamental rights. आर्टिकल 358 358 नहीं भी लिखो तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली से लिख सकते हो, ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 FRs under article 19 the moment the emergency is declared, the moment the emergency is declared.
इज दिस पॉइंट क्लियर? आर्टिकल 359 में क्या लिखोगे? इट डजंट ऑटोमेटिकली सस्पेंस, ओनली एनफोर्समेंट. वही यहां डिफरेंस आ रहा है. इट डजंट ऑटोमेटिकली सस्पेंस एनी फंडामेंटल राइट, doesn't automatically suspense any fundamental right, comma, it only empowers the president, it only empowers the president, ये और specify हो रहा है आपको, it only empowers the president to suspend the enforcement, to suspend the enforcement of specified rights. मतलब 358 जैसे ही आता है पावर में, दिमाग में आ गया आर्टिकल 19 सस्पेंड. बट 359 आएगा तो पहले देखोगे प्रेसिडेंट का क्या ऑर्डर है, क्या प्रेसिडेंट सारे राइट सस्पेंड किए हैं, ऑफ कोर्स 2021 आउट ऑफ क्वेश्चन है, या कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं. दिस इज हाउ सस्पेंशन विल टेक प्लेस. लेकिन 358 के केस में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, आपको पता है आर्टिकल 19 सस्पेंडेड है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द केस अंडर विच आर्टिकल 358 का सस्पेंशन हो सकता है, मतलब आर्टिकल 19 का सस्पेंशन हो सकता है. लेकिन 359 के केस में बोथ, ईदर और. सो यू कैन राइट आर्टिकल 358 ऑपरेट्स ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी. दैट इज ऑन द ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन. (359) it operates in case of both external and internal emergency. Of course we use the term armed rebellion, internal disturbance को replace किया गया था. It operates in the case of both external and internal emergency. Next, fourth point, ये important है. It suspends fundamental rights, 358 में लिखे, it suspends fundamental rights under article 19, FRs under article 19 for entire duration of emergency, right? For entire duration of emergency. इस केस में क्या है, या तो एंटायर हो सकता है या जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन होगा. बोला मैं 4 महीने तो 4 महीने. इट सस्पेंड्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 359 में लिखो, इट सस्पेंड्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड as given in presidential order, for a specified period as given in presidential order, or entire duration of emergency, or entire duration of emergency. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट आ जाओ. It suspends article 19 completely. It suspends article 19 completely. Under 359, it doesn't empower suspension. It doesn't empower suspension on the enforcement of. It doesn't empower suspension on the enforcement of article 20 and 21. ठीक है. लास्ट पॉइंट, आपको पता है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो रहा है, तो इट इज अलाउइंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन टू बी टेकन which is inconsistent with fundamental rights mentioned under article 19. लेकिन आर्टिकल 359 में या तो सभी राइट्स और स्पेसिफिकली डेटा मेंशन अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. तो ये लिख लो लास्ट पॉइंट. अंडर 358 इट इनेबल्स द स्टेट
It enables the state to make any law or take any executive action, take any executive action inconsistent with fundamental rights under Article 90. Is this point clear? Article 90. अब 359 में लिखो last point. It enables the state to make any law or take any executive action inconsistent to those fundamental rights whose enforcement is mentioned under presidential order. Whose enforcement whose enforcement is mentioned नहीं is suspended. Mentioned हो जाएगा तो क्या है बेटा पेन देना एक बार मुझे. Enforcement is suspended under presidential order. तो जिन जिन राइट्स का सस्पेंशन रहेगा उन्हीं के अगेंस्ट लॉ बन सकता है inconsistent with those fundamental rights. So that is all with the difference between 358 and 359. Is it clear, Vinita? समझ में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? You'll be able to answer questions अगर यहाँ से आते हैं तो. So that is all with national emergency. ये important था. Emergency नहीं complete हुआ है, सिर्फ national emergency complete हुआ है. Now we'll talk about second kind of emergency, that is precedence ruled or state emergency or constitutional emergency. Write down precedence rule. कौन से आर्टिकल mentioned है? Precedence rule or state emergency or constitutional emergency. इससे पहले बिकॉज ये पूरा ही जो सीक्वेंस है 352 से 360 और एक 365 भी है 365 भी है सो ऑफ कोर्स सीक्वेंस में है ये सारे स्पेसिफिकली हम 352 356 360 बोलते हैं अगर आ जाता है लेकिन इसके आगे पीछे भी सब इन्हीं से रिलेटेड है तो इसी तरीके से 355 इज रिलेटेड टू दिस ओनली राइट डाउन आर्टिकल 355 व्हाट इज इट जैसे हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल राइट्स हम 14 से याद रखते हैं लेकिन 12 और 13 भी उसी से रिलेटेड है उसी तरीके से 355 इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस 355 क्या है ये इट इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन सेंटर it imposes a duty on center to ensure that the government the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution Is this point clear? मतलब 355 ये ड्यूटी देता है ठीक है दिस ड्यूटी इज गिवन टू द सेंटर यू कैन से यू सी कि जो स्टेट में जो भी गवर्नमेंट चल रही है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे चल रही है और अगर नहीं चल रही है तो क्या करोगे 356 लागू कर दोगे या 365 लागू कर दोगे बोथ आर रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ठीक है सो 355 में वो चीज मेंशन है कि आप 356 इंप्लीमेंट करो और 365 ओके सो राइट इट डाउन
It is this duty in the performance of which, next point, it is this duty in the performance of which the center takes over the government of state, the center takes over the government of the state. आप देखो पूरा कब्जा हो रहा है सेंटर का स्टेट के ऊपर, दैट इज व्हाट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मींस। स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से सस्पेंड हो रही है और सेंटर एक्शन ले रहा है, क्या बोल के कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से सरकार नहीं चला रहे। ठीक है, और कई बार लोग बोलते हैं बहाना होता है सेंटर को कब्जा लेने का, एंड मोस्टली प्रेसिडेंट ऑर्डर पीपल से कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सॉरी दिस प्रेसिडेंट रूल वही इंप्लीमेंट होता है जहां पे ऑपोजिट पार्टी की गवर्नमेंट है। अपनी सरकार की गवर्नमेंट पे कोई नहीं करता क्योंकि वो आपकी पार्टी का सरकार है वहां पे। नॉर्मली दीज क्लैशेस हैपन व्हेन द ऑपोजिट आइडियोलॉजी की पार्टी है। ओके, द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 356। The center takes over the government of under Article 356, comma, in case of failure of constitutional machinery in the state. In case of failure of constitutional machinery in the state. जो मैं पार्टी वाली बात बता रही हूँ ये हिडन वाली चीज है। ऑफ कोर्स ऑब्वियस में तो यही बोला जाता है कि सरकार क्योंकि संविधान से काम नहीं कर रही है इसलिए ये काम हो रहा है। ठीक है, वो तो आप लोग कैलकुलेशन लगाते हो, उसके पीछे की पॉलिटिक्स समझते हो, वो अलग चीज है। ठीक है, बट वो पॉलिटिक्स आप लिखोगे नहीं। तो you can write it in criticism कि many a times president rule is done for some other political reasons। ठीक है, वो criticism में आ जाता है, तो फायदा उठाया जाता है उस चीज का। ओके, machinery in case of failure of constitutional machinery in the state। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the president's rule of state emergency can be under Article 356 on two grounds। President's of state emergency can be under Article 356 on two grounds। पहला ground it is mentioned under Article 356 and second is mentioned under Article 365 6 and दूसरा is mentioned under Article 365। इस पे हम बात करेंगे क्या है। Write down Article 356। क्या है? What is Article 356? It empowers the president Article 356 लिखो, it empowers the president to issue a proclamation proclamation of emergency, of course, issue a proclamation of emergency, मतलब state emergency, if he is satisfied, तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल कौन डिक्लेयर कर रहा है? President। Okay, if he is satisfied that the situation has arisen, if he is satisfied that the situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, in accordance with the provisions of the Constitution, with the provisions of the Constitution। Is this point clear? 356 समझ में आ रहा है क्या है? अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो स्टेट की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, then it can implement president rule, that is 356।
तो मैम 365 क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? राइट इट डाउन. 365. If state fails, if state fails to comply with or give effect to any direction from the center, or give effect to, effect, EFFECT, or give effect to any direction from the center, comma, it will be lawful for the president. It will be lawful for the president to hold the situation, to hold that the situation, to hold that the situation has arisen, to hold that the situation has arisen in which the government cannot be carried, in which the government cannot be carried in accordance with the provisions of the Constitution. With the provisions of the Constitution. In accordance with the provisions of the Constitution. Is this point clear? बात डिफरेंस समझ रहे 356 and 365 में? विनीता, are you understanding the difference between both? 356 is, फिर से समझो, प्रेसिडेंट डायरेक्टली सीज कि ओके स्टेट इज नॉट फंक्शनिंग, वो संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही, मैं प्रेसिडेंट रूल लगाता हूँ. 365 में है अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शन दिया है और वो स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन को प्रेसिडेंट ये बोल सकते हैं कि हाँ ये ऐसी कंडीशन है कि ये सरकार जो है संविधान के हिसाब से नहीं चल रही. गेटिंग? तो मोस्ट ऑफ द टाइम में 365 वाला है वो थोड़ा सा, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं सेंटर का इन्फ्लुएंस आ रहा है प्रेसिडेंट के एक्शन पर. गेटिंग दिस पार्ट? बट बोथ आर रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स रूल. You can say 356 is direct failure of the constitution and 365 is failure in following the direction of the center and then saying okay you're not following the constitution. Getting? Both are related to presidents. Okay. Can you tell me, is judicial review possible in this case? Yes, judicial review. Judicial review क्या होता है स्वजल? तो बताओ क्या ये पॉसिबल है? इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी के केस में जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है? हो सकती. क्यों? रीजन बताओ अनीशा. क्यों? लॉजिक तो बताओ. लॉजिक अगर समझ में आ रहा है तो ये बताने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा. लॉजिकल, इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं है. इट्स ऑल लॉजिकल. लॉजिक तो बताओ मुझे अगर समझ में आ रहा है इमरजेंसी तो. प्रियांशी क्यों? यस, इंटेंशन मालाफाइड हो सकती है भाई राष्ट्रपति की. वो नहीं चाह रही है सरकार काम करे या कोई और इंटेंशन हो सकती है. तो जब इंसान एक्शन ले रहा है तो उसको जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है. पहले था कि नहीं होता था, लेकिन अब आप ये सोच सकते हैं नेशनल इमरजेंसी में भी तो था जुडिशियल रिव्यू. नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू था तो स्टेट इमरजेंसी में भी हो सकता है. सो रिमेंबर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है. इसमें स्पेशली केस लिख लो एसआर बोमई केस 1994, सुप्रीम कोर्ट का वेरी फेमस केस एसआर बोमई. एसआर बोमई, BOMMEI, बोमई केस, एसआर बोमई केस 1994. क्या लिखा है? said judicial review is possible for president's rule. Judicial review is possible for president's rule. For president's rule. क्या लिखा? लिखो नेक्स्ट.
ये तो अंडरलाइन कर लो, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल. नेक्स्ट पॉइंट, the court held that Article 356 should be imposed. Article 356 should be imposed. 356 should be imposed only in the event of a breakdown of constitution. Only in the event of Article 356 should be imposed only in the event of a breakdown of the constitution, constitutional machinery, breakdown of constitutional machinery, as distinguished from an ordinary breakdown of law and order. ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन होना चाहिए, नहीं ये नहीं कि आप बोल दो नहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है. ठीक है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन ऑर्डिनरी ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, full stop. You can write in short, this case restricted the misuse of Article 356. So which case restricted the misuse of Article 356? वहां पे एक केस का एग्जांपल एसआर बोमई केस होगा, याद रखना. It is this case that restricted the misuse of President's rule. क्या प्रेसिडेंट यूज को रूल को मिसयूज मत करो कि नहीं आपकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट वाली पार्टी है वहां पर और वो सरकार चला रही है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो. आपने कई बार पढ़ा होगा कि बोले प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, लोगों ने हाँ ये यही करेंगे क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी इनसे अलग है, हम दूसरी पार्टी के हैं. तो ये बात रेस्ट्रिक्ट करी एसआर बोमे केस में. नो, यू कैन नॉट मिसयूज प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल इसलिए दिया है कि आप संविधान को बचाओ, ना कि अपनी सरकार को बचाओ. ठीक है. Now, time period, very important, time period. Difference है. National emergency का what was the maximum time limit? Indefinite. President rule का maximum time is 3 years with approval every 6 months. Get the difference? याद रखना, national emergency unlimited, president rule 3 years. Write down. President rule continues for 6 months. President rule continues for 6 months. The maximum period to which it can be extended is, the maximum period to which it can be extended is 3 years. The maximum period to which it can be extended is 3 years. 3 years underline kar lo, maximum period 3 years. With approval of parliament every 6 months. With approval of parliament every 6 months. अब प्लीज नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल. पहला डिफरेंस तो यही दिख गया आपको कि मैक्सिमम पीरियड नेशनल इमरजेंसी अनलिमिटेड, प्रेसिडेंट रूल 3 years. बाकी अप्रूवल टाइम सॉरी कंटिन्यूएशन का जो टाइम है वो 6 months का अप्रूवल चाहिए, ये तो ऑलमोस्ट सेम है. नेक्स्ट, अप्रूवल टाइम क्या है? नेशनल इमरजेंसी में क्या था अप्रूवल टाइम? 1 month. यहां पे मैं बता दूं इट इज 2 months. ठीक है, राइट इट डाउन. अ प्रोक्लेमेशन अप्रूवल, द प्रोक्लेमेशन अप्रूविंग a proclamation approving president's rule must be approved by both the houses of parliament, must be approved by both the houses of parliament, must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of its issue. ठीक है.
अब डिफरेंस समझना यहाँ पे, ये तो हो गया टाइम लिमिट। फिर एक बात मैंने बताई थी आप लोगों को नेशनल इमरजेंसी के केस में, दैट इन केस लोकसभा इज नॉट इन पावर, देन व्हाट विल हैपन? विद इन व्हाट डेज? बेटा 6 मंथ्स का है, 30 डेज। और मीनवाइल किसको अप्रूव कर देना है? राज्यसभा। सेम अप्लाइज हियर, यहाँ पे भी 1 मंथ ही है, 2 मंथ्स नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे भी 1 महीना ही है। जब अगर लोकसभा पावर में नहीं है, विद इन मीन टाइम राज्यसभा विल अप्रूव इट, एंड वंस लोकसभा सिट्स विद इन 1 month it needs to approve it. Write down note. However, if proclamation of president's rule, however, if proclamation of president's rule is made at a time is made at a time when Lok Sabha has been dissolved, when Lok Sabha has been dissolved, or dissolution of Lok Sabha takes place, or dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months, during the period of 2 months, during the period of 2 months, 2 months, without approving the proclamation, without approving the proclamation, मतलब उन 2 महीनों में बिना अप्रूव किए वो डिसॉल्व हो जाती है, then proclamation survives, then proclamation survives until 30 days, until 30 days from the first sitting of the new Lok Sabha, 30 days from the first sitting of the Lok Sabha, after its reconstitution, until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution, comma, provided that Rajya Sabha has approved it in the meantime. Rajya Sabha has approved it in the meantime. क्या चीज? यस, क्या जाना है आपको? बस ये लिख लो, टाइप ऑफ मेजोरिटी नीडेड लिख लो, ठीक है, देन विल वाइंड अप। मैं चाह रही थी एटलीस्ट आपका ये कंप्लीट हो जाए, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल कंप्लीट करा दो बस। हाँ, टाइप ऑफ मेजोरिटी नीडेड लिख दो। व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी डू यू थिंक इट विल बी नीडेड? यहाँ पे इट इज सिंपल, लिखो फॉर प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यूएशन, रिमेंबर बोथ, दोनों के लिए, ये एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट रूल का। फॉर प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, the resolution must be passed by continuation and proclamation of president's rule must be passed by both the houses। वहां पे प्रोक्लेमेशन कंटिन्यूएशन स्पेशल था, ओनली रिवोकेशन वाज सिंपल। यहाँ पे प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यूएशन बोथ इज सिंपल, must be passed by both the houses only by simple majority। ठीक है,
by simple majority, that is majority of the members of that house present and voting. ठीक है, so that is with type of majority. Last में consequences लिख लो, consequences of president's rule, ज्यादा नहीं है, छोटा सा topic है ये, consequences of president rule. नेशनल इमरजेंसी के केस में काफी बड़ा था, आपको पता है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट से बस वो लिखने, लिखो. प्रेसिडेंट एक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, प्रेसिडेंट एक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स when president is imposed like, number one, when president rule is imposed like, number one, he can take up the functions of the state. Number one, he can take up the functions of the state government. He can take up the functions of the state government and powers vested in the governor, and powers vested in the governor, vested, vested, vested in the governor, or any other executive authority of the state, or any other executive authority of the state. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है, इसी तरीके से गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो उन सारों का फंक्शन कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, इसीलिए लोग डरते हैं प्रेसिडेंट रूल से. नंबर 2, he can declare that the powers of the state legislature, he can declare that the powers of the state legislature are to be exercised by the parliament. Exercised by the parliament. ठीक है. थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये बात समझ में आ रही है, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर भी पार्लियामेंट को दी जा सकती है, मतलब एक तरह से पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में आ गई है, सेंटर के कंट्रोल में आ गई, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर. थर्ड पॉइंट, he can take all other necessary steps, he can take all other necessary steps including the suspension of constitutional provisions relating to any body or authority in the state, or authority in the state. Conclusion में लिख लो, so when president's rule is imposed, when president's rule is imposed in a state, the president dismisses the state council of minister, the president dismisses the state council of minister headed by the chief minister. ठीक है, तो मैम कभी ये दैट इज ऑल, कभी ऐसा मैंने बताया कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, और ऐसा हुआ है 2016 में जब आपका अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था, 2005 में लगा था बिहार में, उत्तराखंड में लिखा था 2016 में, कोर्ट्स हैड स्ट्रक डाउन दैट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंट रूल का, मतलब जुडिशियल रिव्यू इज
पॉसिबल, ये कि नहीं ये गलत, आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है वो गलत है। तो आएगा ना क्वेश्चन कि मैम आज तक हुआ है कि इतनी बार प्रेसिडेंट रूल हुआ है, तो क्या कभी जुडिशियल रिव्यू इस तरह से हुआ कि वो नेगेटिव गया? गया है। एंड प्रेसिडेंट रूल रुका है, हाँ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया, लेकिन प्रेसिडेंट के दरखास्त को जो भी है ऑर्डर को खारिज कर दिया, ये भी हुआ है। सो दैट इज ऑल विद द प्रेसिडेंट रूल। टुमारो विल जस्ट, जैसे मैंने बताया, एक कंपेरेटिव चार्ट बनाएंगे एंड देन विल स्टार्ट विद थर्ड एंड लास्ट emergency, financial emergency. So that is all for the day. That is all for the day. Thank you.